हेलो बेटा, यू आर वाचिंग एमएस क्लासेस। आज हम कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है बेटा, मैथमेटिक्स क्लास 10 सेक्शन फार्मूला एक्सरसाइज 7.2। वी हैव गिवन वन क्वेश्चन इफ वी हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, जे साडे कोल 2 पॉइंट है ए एंड बी और कोई तीसरा पॉइंट ओ एक्स कोमा वाई ਉਹਨੂੰ डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो च, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੂੰ यदि ਅਸੀਂ फाइंड करना है या एक्स एंड वाई ਨੂੰ फाइंड करना है तो ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ फार्मूला यूज करांगे? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन मीन्स द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ए बी इनटू 2 पार्ट। so this is the question, find coordinate of O point. this is O point if A and B divides by O in the ratio 2:3। ठीक है, सिंपल या क्वेश्चन है। वी हैव अब लाइन A एंड B। A ਦੇ कोऑर्डिनेट है -1,7, B ਦੇ कोऑर्डिनेट है 4,-5। then AB divide by which O, the coordinate of O x, y, then ratio is 2:3। मैं क्या, this question is with two type, we have to find out the coordinate of O or we have to find the ratio। so this is by section formula। so what is section formula? section formula is what we have to find out the coordinate of O। so O coordinate is x, this is m1 into x2 plus m2 into x1। तो देखो m1 into x2 plus m2 into x1 over m1 plus m2, this is the section formula to find out the coordinate that is x part। ठीक है, तो x फाइंड करने वास्ते सेक्शन फार्मूला यूज कर रहे हैं। हाँ, आ सिंपल फार्मूला थानू याद करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1? m1 इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज x2, दिस इज इक्वल टू 4। सो 2 into 4 plus m2, this is equal to 3 and x1, this is equal to -1 अपॉन 2 plus 3। ठीक है बेटा, सो 2 into 4, this is equal to 8 plus 3 into -1, this is equal to -3 upon 2 plus 3 is equal to 5। ठीक है, so 5 plus into -3, this is 8 minus 3 upon 5, right? so 8 minus 3, this is equal to 5 upon 5 is equal to 1। so x is equal to 1। आ गया, x is equal to 1। now y, this is again m1 into y2। I am writing here m1 into y2 plus m2 into y1, m2 into y1 upon m1 plus m2। ठीक है बेटा, so m1, this is equal to 2 into y, this is equal to -3, this is equal to m1 into y2, 2 into -3 plus m2, this is equal to 3 into y1, this is equal to 7। ठीक है बेटा, this is 3 into 7 upon m1 plus m2, 2 plus 3। clear? so look once again, m1 into y2, m1 is equal to 2, y2 is equal to -3। I am writing here m2 is equal to 3 and y1 is equal to 7। so 2 into -3, this is equal to -6, 7 into 3, this is equal to 21 upon 3 plus 2, this is equal to 5 and this one is equal to 21 minus 6, 21 minus 6, this is equal to 15, 21 positive, 6 negative, this is plus 15। so this is 15 over 5 and I will get this is equal to 3। therefore y is equal to what? y is equal to 3। therefore O coordinate x comma y is equal to 1 comma 3। so this is the answer। so beta, very simple question, how to find the coordinate of O if your O divides the point A and B in the ratio 2:5। ठीक है बेटा, सिंपल इज तो वाइस वर्सा है क्या? वाइस वर्सा भी होएगा
कि यदि ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡੀਨੇਟ ਸੌਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ A ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ B ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਯੂਜ਼ ਦਾ same formula. ठीक है बेटा, so this is the question, how to find the coordinate, right? If I will find one more question, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, you will understand by that question this formula is used in two or more way. ठीक है, ज़्यादा तरीके भी यूज कर सकते हैं. देखो फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो. हम रेशियो फाइंड करनी है, लिखते हैं फाइंड द रेशियो फोर्थ क्वेश्चन इफ 0.3 and point -3, 10 and 6, -8 divides by -1, 6. सिंपल या क्वेश्चन है, देखने ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा. If you have given 2 points -3, 10 and 6, -8, the divide by -1, 6, then find the ratio. This is again by using section formula. Let me use the diagram. This is the diagram A. Let this is point B. So A is equal to -3, 10 and B is equal to 6, -8, and point that O is equal to -1, 6. You have to find the ratio. Let the ratio is k is to 1. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ find ਕਰਨੀ ਹੈ ratio, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ use k is to 1. Then section formula, when x is equal to, by using section formula, m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2. So what is m1? m1 is equal to k, and what is x? This is equal to 6 plus 1 into -3, ठीक है, upon k plus 1, k plus 1. And what is x? x is equal to -1, ठीक है बेटा. So -1 is equal to k into 6. This is equal to k into 6, 6k plus this is equal to 1 into -3. This is equal to -3 upon k plus 1, ठीक है बेटा. So this is -1 is equal to 6k minus 3 plus into minus. This is equal to k plus 1. When I will write this 1 is as -1 over 1, after making cross multiply, it will be equal to -k minus 1 is equal to 6k minus 3. Minus k minus 1, this minus change the inner sign of a k and 1. So minus k minus 6k minus 3 plus 1. Minus 6 goes from right to left become negative 6k. Minus 1 goes to left to right become positive 1. So this is minus 7k, and this is plus minus 2 only, and this one is equal to k divided by -2 upon -7. Negative sign cancel out, then your ratio, this is equal to 2:7. Hence O जब -1,6 divides A and B in the ratio 2:7. 2:7. This is answer. ठीक है बेटा. जब -2 and -7 लिख सकते हैं, या +2 and +7 लिख सकते हैं. So because negative sign cancel out with the negative sign. So this is the question. I hope you will use the formula to find out the solution. पूरी exercise इस single एक formula के अंदर use करनी है. Okay बेटा. Okay, bye bye.